Sorry, come here. You all are feeling really very good. अच्छा, ask him to off it. चालू है। हाँ, बंद करने बोलो। But बाद में बहुत बच्चे। Yeah, I don't want these benches vacant. Immediately come. We are here from second bench. Okay. Not consider this bench. नहीं, I have to consider. Yes, go ahead. Yes, to आगे। वो तो गए। चलो चलो आज। तो ऑफ करने बोलो ना, मैं बोल देती हूँ उनको। पूरा खराब हो जाता है वेंटिलेशन। ओ यस आ गए। यस आगे जा। मैम वो उसकी जगह यस। चिंगम फेंक के आ दे रहा है। चल। यस तू आगे। तेरी जगह वो। जल्दी से फेंक के आ दे। तो सेकंड खाली रहेगा ना, क्या फायदा? सेकंड मिनट लग जाएगा। Please don't waste your time. हाँ। यस नो। पर आगे चल। ऑफ कर दो एसी। पीछे जाके बैठना है इन लोगों को। ये आगे चल। अब क्या फर्क पड़ेगा? मैं अकेला यहाँ पे बैठा। चलो। ना मैं यहाँ पे बैठूँ क्या? यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं आता। चलो बैठो। यहाँ पे बैठने बोला, यहाँ बैठने बोला। आजा लास्ट वीक में नहीं हुआ था, उसके पहले हो गया था। मुझे कहाँ तक एवरी टाइम so it is something different from your textbook. Yes, like we take कुछ नहीं आपने बोला कि देखो एक टेक्स्ट बुक कैसी है, कुछ भी सही नहीं है। आई चीज नहीं है चीजें ये सेकंड बेंच वैकेंट, एक बच्चा आ जाओ आगे। ये वाला मुझे कहाँ से लेना? एटलीस्ट लेट मी नो फ्रॉम व्हिच पार्ट आई हैव टू स्टार्ट। No, I don't think we have completed functional group. फंक्शनल हो गया था हम। Full? Homologous series we have completed ना? Homologous series और functional group कैरेक्टर्स हो गए थे। इतना नहीं और homologous series। फंक्शनल ग्रुप से ही हुए कैरेक्टर्स। हाँ, फंक्शनल ग्रुप से ही हुए। देखो आप लोग साथ में बैठते हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है आपको कोई भी पॉइंट मिला ना, यू ऑल स्टार्ट डिस्कसिंग अमंग योरसेल्फ। दैट आई डोंट वांट। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड टिल बस हो गया functional group characteristics. Yes. Okay, now the next part is hydrocarbons. Take down heading hydrocarbons. Yes. आपका वॉल्यूम, पेंसिल, पेन, नोटबुक, कीप एवरीथिंग विथ यू। ओके, सारे पॉइंट डिक्टेट करके नोटबुक कराना कंप्लीट। इट इज नॉट पॉसिबल, सो फ्यू पॉइंट्स वी विल डायरेक्टली अंडरलाइन फ्रॉम योर वॉल्यूम और टिक इट फ्रॉम योर वॉल्यूम। थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है सॉल्व वर्कआउट करना है, दैट वी विल राइट। वॉल्यूम पेज नंबर इट इज 59। Volume 1, 2. हो गया, मिल गया सबको? नहीं, आपको नोटबुक निकालना बैग में से। तो ऐसे फिनिश हो के तो बिठाया क्या आगे। Now, as this topic, it is hydrocarbon. From name itself, it is clear. These are the compounds which are made up of carbon,
and hydrogen. Okay, so these compounds, they are mainly made up of carbon and hydrogen. And one more thing you have to remember, that we are studying this particular subtopic hydrocarbon in organic chemistry. So organic chemistry, it is a chemistry of carbon compounds. Okay, so terms are very much related. Organic chemistry, this is a chemistry of carbon compound, and hydrocarbon means what? They are the compound which are made up of hydrogen and carbon atom. Carbon इसमें तो essential है ही, without that it is not at all possible. Then the second point, it is given the molecular formula. So in simple term, it is given CXHY. CXHY, where you can take number of carbon and hydrogen as per depending upon the family. For example, for alkane, alkene and alkyne, I have given you the general formula. बराबर है ना? तो according to that you can write down the number of carbon and hydrogen in the given formula. Now whichever compound you are using now, this CH, it is always playing the role of parent. This is a parent compound. Either you can have member from your alkane family, you can have from alkene family, you can have from alkyne family. These are the simple aliphatic compound, or you may have aromatic compound. इसके भी example है हमारे पास में aromatic compound, but this all, they are always playing the role of the parent. By replacing hydrogen atom, by replacing hydrogen atom, by removing hydrogen atom, by substituting hydrogen atom, you can obtain derivatives. You can obtain its derivatives. For example, if you go with a simple example, CH4. Okay, this is from this family, alkane family. I can replace one hydrogen, or I can replace more than one hydrogen atom to obtain any other compound. For example, if I am replacing one hydrogen atom, which compound is this? यहाँ पे देखो, which compound is this? नाम बताना है, फॉर्मूला मुझे भी दिख रहा है, नाम बताना है, क्या है ये? मैंने I have replaced one hydrogen atom here, CH4. पहले ही बताया है, this all will play the role of parent. So CH4, okay, methane. One hydrogen atom, it is less here, so one hydrogen atom, it is replaced by Cl. Which compound? मिथाइल क्लोराइड. सॉरी मिथाइल क्लोराइड. मेरे को पता ही नहीं चला मैं क्या बोल रहा था. मिथाइल क्लोराइड मैंने पहले मिथाइल क्लोराइड बोला, पर बाद में आपने मैंने आपको फर्स्ट आई हैव नॉट टोल्ड बिकॉज़ आई एम राइट. तो many times while explaining I have said रुको जरा, क्योंकि वो जो फ्लो है ना वो फटाफट हो जाएगा ना, then I can come back to the question. Understood ना? In this example, I have just replaced one hydrogen atom by one chlorine atom. Okay, instead of that, if I go with this formula, CH3OH, पहले मुझे ये बताओ मैंने यहाँ पे किया क्या? एक हाइड्रोजन से OH को रिप्लेस किया है. हमने ये पढ़ा था इन फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट में. It is an atom or the group of atom which represent characteristic property of the given compound. So here, which group is this? बेटा एक काम करो, keep your bag in center. ऐसे आ जा. Move this side. Back center में रखो दोनों का. We keep in middle. हाँ. Which is this group? Hydroxy group. It is attached to methyl group. Now which compound is this? Methanol or methyl. Understood now? So this all are playing the role of parent. When you replace hydrogen atom, आप कितने भी replace कर सकते हो. Here I have replaced only one. I can replace all four also. CCl4. आपको शायद ये सारे compounds पता रहेंगे कौन से हैं. Okay, here I have replaced 3, here all 4, this is chloroform, this is carbon tetrachloride, right now, but again, which is a parent compound here? Methane, methane, right? Understood? Okay, so when we are saying hydrocarbon, hydrocarbon means what? They are the compounds which are made up of carbon and
hydrogen. First thing. Second thing, this is the formula. It may be alkane, alkene or alkyne. It is just showing the number of carbon and hydrogen. ऐसे उसमें कुछ अलग से नहीं. आप you go with any of this family, it will give you the number of carbon and hydrogen. When you are replacing hydrogen, ये replacement वाला reaction था, तो मैंने replace कर दिया. I can have reaction of removal also. Okay, in that case from saturated compound I will get unsaturated compound, which is the next part. So that example we can also take. Okay, but remember always this will play the role of the parent compound. ये लिखा के देने की जरूरत नहीं है ना, इस पे तो आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं. They will ask question on this part. Now the next part, it is a classification of hydrocarbons. ये लिखो, ये ज्यादा important है. Classification of hydrocarbons, और हमको ये बनाना भी है classification. Classification of hydrocarbons. क्या हो गया? अब भूख लग रहा है? भूख लग रहा है पीछे से? You all are intense. थोड़ा sensible होके behave करो. Classification of hydrocarbon लिख दिया. Now classification में हम क्या करेंगे? We are going to divide here. We have taken everything together ना, सब एक साथ में सबको parent बना दिया, लेकिन उसका भी कुछ तो criteria चाहिए ना कि on what basis it is classified. So this hydrocarbons ऊपर लिख दो hydrocarbons. This classification, one more thing you note down. This classification it is based on nature of carbon chain. कहीं पे आपको हिंदी लिख के रखो. Nature और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं. नेचर ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसा मत करो. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. ओके. Now this hydrocarbon, basically they are divided or classified into two groups. The first one पहले देख लो, then you can start writing. First one it is open and second it is closed. Okay, open chain compound and closed chain compound. Open chain मतलब one after another. It may be straight, it may be branch, anyhow. But compounds are in open format. Whereas closed chain, they are also known as ring compounds. So closed packed structure will be there. Okay, पूरा बंद, कुछ कहीं से कुछ open नहीं रहेगा. Now this category open chain compound, they are further divided into two parts. First part it is saturated, and second it is unsaturated. Okay, saturated, unsaturated. What is the difference between these two? Saturated and unsaturated or alkynes. Okay, correct. But how you will define saturated? Example आपने बता दिया, right ना? Single bond between carbon atom, right? Moisture यहाँ पे कहाँ पे आते हैं? We are not doing any reaction, we are just classifying. Okay, saturated means compounds containing carbon single bond. What is valency of carbon? 4. अगर मैंने यहाँ पे अगर ऐसा भी लिखा है, इसका मतलब आपको पता है ना, each carbon is having 4 bond around. Okay, so from that complete this one alkane, alkene, alkyne, which family we can include here? Only alkane family. Alkane, and example, any example of your choice, CH4, or you can go with second one, C2H6, and write down name. These are the molecular formula, right? मैंने आपको last time बोला था, these are the molecular formula where we are giving exact number. देखो, right now exact number.
So these are the molecular formula. Write down name. Methane, ethane, जो आपको पसंद है, easy लगता है, याद रहता है exam time में. Write down that one. Now under unsaturated. So here we have defined carbon-carbon single bond. Alkane इसमें से we have already completed. What about this one? Unsaturated. Triple bond. So in short we can say compounds containing multiple bond. Okay. So here we can have double bond and triple bond. Triple bond. Under double bond, which family we can include? Alkene. ALKENE. Here alkyne. ALKYNE. Example, simple example with name and formula. याद रखो ये. हाँ, आप कोई भी पेपर लिखो, but this is very important because this all things are basic and from beginning only you are learning all the formula. It will be well and good. One member from here, one member from here. C2H4. Name? Ethene. Here? हाँ, बोलो बोलो बोलो. C3H8. What is general formula of alkyne? C3H4. मैंने पढ़ाया था ना. क्या फॉर्मूला था alkyne का? CnH2n. जरा एक बार बता दोगे मुझे जनरल फॉर्मूला फॉर alkane? CnH2 CnH2n plus 2. For alkenes? CnH2. हाँ. For alkynes? CnH2n minus n. And 2n minus 2n minus 2. easy to remember. This three formula. In beginning we are writing plus. At the end it is minus. Middle वाला it is without this. अब याद रहेगा. So what formula you will write here? C3H4 correct है. C5H10. देखो C3. So 6 plus 6 minus 3. 3. कितना होता है? 6 minus 2 sorry. 6 minus तो यहाँ पे आ जाएगा C3H4. ये वाला फॉर्म 3 2 3s are 6 6 minus 2 C5H8. क्या है? C5H 10 minus 2 8. बराबर है ना? ठीक है. इसका स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा आपको? श्योर? हाँ. किसका? This one. It will be longer. And you may have this one also. Isomers for this. इसका तो easy है. हाँ. Which is the next member? C3H6. H6 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका C3H6 का? C और H First chain of 3 carbons. और H. Then we have to show triple bond. As it is 3 carbon from this end or this end, you can start. Then carbon. Double bond. Oh, sorry. This one we are doing, no? 1, 2, 3. Okay. Then hydrogen atoms. 3, 2, 3. Here 1, 4, 2, and this 2. 2, 3 and 3, 6. Okay? इसका कैसे कर सकते हैं? 1, 2, 3. Then 1 triple bond. Then here 1 hydrogen. इसको कोई hydrogen नहीं आएगा. And for this 3. कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4. 1, 2, 3 and 6 is 4. है ना? Okay. So saturated means carbon-carbon single bond. Alkanes. Write down any one compound with formula. अगर structure आता है तो लिखो. But normally we are not writing structure in this. Just give the molecular formula with name. Unsaturated, double and triple, alkene and alkyne. Formula and name. Okay. अगर याद नहीं आ रहा है, then you can use that general formula वाला. These 3 formulas are there. First it is plus, last it is minus 2, and in between there is no sign, no negative sign. Now coming to this part, closed chain. Now in closed chain, in our book,
I think only one part is given. Benzene. Aromatic वाला. Okay. Only आपके सिलेबस में नहीं. हाँ सब contains benzene ring. सिर्फ बेंजीन का मुझे सिर्फ क्लासिफिकेशन बता दो. Contain benzene ring. Okay. यहाँ पे दिया है ना compound of carbon and hydroaliphatic and aromatic as पर cited. हमें वो आपने बताया नहीं अभी पर aromatic से open chain और हाँ पता. यहाँ पे देखो. For closed chain, we are doing in your syllabus only aromatic compound is given, okay? But here again two types are there. Alicyclic, we are under closed compound, huh? Alicyclic and aromatic. ये याद रखना. आपके बुक में जैसे आप वैसे ही करो. Now alicyclic, they are similar to our They are cycloalkanes. They are similar to alkanes. Okay? अभी सिलेबस में नहीं है, ज्यादा फोकस नहीं देंगे इसके ऊपर. You just remember closed chain में बोलेंगे तो even if in your book it is given aromatic, but it is divided into two parts, alicyclic and aromatic. Okay? Aromatic means what? Benzene ring is there. Okay? And this benzene ring, it is with alternate double bond. Whereas in this it is similar to alkane, so there is no double bond, only ring structure is. This is a major difference. Close है दोनों भी. Both are hexagonal. कोई अंतर नहीं है. Both are hexagonal ring. One it is without double bond. It is alicyclic. It is similar to alkane. देखो alkane में भी double bond नहीं है, but the only difference is that it is cyclic compound. But aromatic compound, it contain alternate double bond. Conjugate system of double bond. यहाँ पे जो aliphatic है, aliphatic के लिए sorry open है, इसके लिए दूसरा टर्म है aliphatic. So here comes alicyclic. Similar है ना alicyclic. Similar aliphatic और alicyclic. Similar हाँ नाम में aliphatic and alicyclic. Okay, this is similar to what I said, similar to cycloalkane, but you can have cycloalkenes also. Alkenes मतलब क्या हो जाएगा? Double bond. There will be at least one double bond, but this system it is completely different for benzene. Benzene is having alternate double bond, एक double एक single, double single, double single. So this is conjugate system of double bond. याद रहेगा? पक्का? Sure? Any doubt in this classification? कुछ नहीं समझा ऐसा? बनाओ अभी. नहीं हाँ आप बनाओ. Try to make it without looking. मैं बोर्ड से निकाल नहीं रही हूँ. Just you try to make it without looking. Try to make the structures. Of course yes. ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको लिखने मना किया था ना. आप लोगों ने लिख लिया है पहले. फिर से बनाओ. हाँ करो फिर से. Without looking now you can try. Basic is what? हाइड्रोकार्बन This classification. लिखना है. हाँ पेपर में अगर क्वेश्चन अगर आ रहा है क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन तो डायग्राम ड्रॉ करो. हाँ विद एग्जांपल. अगर नहीं भी विद एग्जांपल बोला है तो अगर एग्जांपल डालोगे इट विल बी प्लस पॉइंट. इजी तो है. क्या करना है? ओपन क्लोज, ओपन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. यू नो एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. क्लोज में एज पर योर बुक it is only aromatic. If you want you can go with this one, alicyclic and aromatic. आपका मार्क्स तक नहीं होने वाला, I am sure. Because actual classification is this one. Start doing now. Side by side, those who have completed can write down definition for saturated, unsaturated. डायग्राम को ट्राई करो. कौन सा डायग्राम चेक करो? एलपी को डायग्राम. क्या नहीं देखते? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बिना देखे. एग्जाम्पल तो आप खुद भी लिख सकते हो ना. वो तो मैंने ऐसे ही इजी टू रिमेम्बर में फटाफट दे दिए. क्या चेक करना है?
अच्छा this मैम C2H6 नाम लिखो ना बेटा, नाम लिखो and see here open aliphatic open chain compound पूरा करो plus open chain compound or aliphatic compound, closed chain compound or ring compound, further divided alicyclic and aromatic. हाँ, अगर आपको अगर बुक के हिसाब से जाना है you just go with the aromatic, but this is the actual classification. और इसके नाम लिखने हैं. Whichever example you are giving in molecular formula ना, write down name. Can you just help me? C2H6 आपको तो करेंगे. क्या करना है इसको? C2H6 हो गया क्या? Calculation देखो 2 carbon you have written. Yes. What about hydrogen number? 6 carbon. तो कितना हो गया 1 आपका? 2 3 4 6. What about remaining 2? It is under alkane ना? Yes. Carbon carbon single bond. हाँ और सीधा करके हो गया. कहाँ पर हो? Here. This is cyclohexane. इसका नाम is cyclohexane ना. If you are giving this example, this is cyclohexane. Take one more. This is cyclopropane triangle. This square is cyclobutane, and this is cyclopentane. Carbon का number check करो. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो करेक्ट. हाँ ये देखो मैं बताती हूँ. दिस इज अंडर ये किसका एग्जांपल है? इसमें से किसका एग्जांपल है? इसका एग्जांपल इसके लिए भी ये डबल बॉन्ड ना. अल्कीन डबल बॉन्ड है, अल्केन सिंगल बॉन्ड. हाँ ये ट्रिपल बॉन्ड का. तो देखो आप सिंगल क्या लिखा है? कुछ भी लिख लो. ओके बेटा. एग्जांपल का नाम जो सेक्शन बना इसके नाम पे मीथेन ईथेन स्पीकिंग राइट. तो ये हमने किसके अंदर किया था? विद डायग्राम. हाँ ये देखो बेटा. See here. Just junction points are CH2, but when you are making this closed structure, ना there is no need to write down CH2. हम हमारा टाइम बचाने के लिए ये ऐसे डायरेक्ट बना रहे. समझ में आया? These junctions are CH2, but once you draw it now, not necessary to write here CH2, CH2. It is understood. It is CH2. हाँ ज़्यादा टाइम नहीं, फटाफट हमको पेपर भी तो कंप्लीट करना है. हाँ बेंजीन का फॉर्मूला तो नहीं लिखा है हमने. We have just made structure. What is formula of benzene? सर आपने बोला कि क्लोज रिंग में है ही नहीं, मतलब एलिसाइक्लिक भी है. I am asking formula of benzene. I'm not telling about that. I'm telling about this one. नहीं मैं फिलहाल उसके बारे में बात कर रही हूँ. मैं उधर भी आती हूँ. हाँ बोलो. C6H6 बराबर है ना. Here this is structure of benzene, but formula is C6H6. और यहाँ पे मैंने इसलिए इसको ऐसे बोला है कि अगर आप ये बना रहे हो तो अलग से ये रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है. Either you go with this one or this one. Better you go with this one. यही बताना है हमको. Cyclic compound we are showing ना. Understood ना? हो गया तुम्हारा डाउट क्लियर? This is structural formula. This we are writing molecular formula. इसका मतलब है CH2. अगेन बना के हमारा टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे. We will go for the next. चलो you have to write down definition of saturated, unsaturated, alkene, alkyne. तो आपको सब कुछ पता ही है. Okay. Now we have two categories, saturated and unsaturated. अब मुझे ये तो नहीं पता आपके सिलेबस में आपने ये वाली चीज स्टडी की है या नहीं. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. So carbon is forming bond with another carbon atom.
This bond, it is covalent bond or ionic bond. ये हमने कैरेक्टर में पॉइंट किया था. Covalent bond, okay. Covalent bonds are further divided into two types. Which are those two types? कौन से उसके दो टाइप? Polar covalent है, non-polar covalent. ये कब हो गया था? ये कब हो गया था? मैम उसमें इसका classification किस लिए? ऐसी तो मैं लगाने बोलूंगी, बट बैठना तो उधर ही पड़ेगा. उधर जो कॉर्नर में तुमको कॉल हो गया. पीछे कॉर्नर में जाना. तू अकेला जा, इसको लेके मत जा. Okay. So between this carbon atom there is covalent bond. If you compare this three, single, double, triple. Okay. What about the reactivity order? इससे मैंने types of covalent bond पूछा. Reactivity order. ज़्यादा reactive कौन रहेगा इसमें से? Alkane. You need to justify your answer, ना? Ma'am, alkanes क्योंकि bonds and the threading of the reaction fast. कौन सा bond share नहीं होगा? Alkane में ज़्यादा नहीं strong bond नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Justify करो. Whatever answer you are giving, ना justify with the reason. उसमें reason नहीं दिया हुआ है. मैंने देख लिया है. Reason is not mentioned there. But let's see the compounds and. Oh my God, compounds are here. ऐसे आता तो फिर आप डायरेक्ट आंसर दे देते थे. Reactivity, which is more reactive from first, second, third. कौन सा? First. Why? because it's more reactive. Because it Because it has has more free valence. yes, more availability of electrons. Free valence electrons. Not free High electrons. electronegativity. Yes. किसको? Both carbon atoms are there. What is meaning of electronegativity? मतलब ज़्यादा अटैक कर सकते हैं. तो दोनों भी कार्बन है ना. दोनों दोनों फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपके जैसे ही किसी को बिठा दिया सेम टू सेम एकदम कुछ नो डिफरेंस नॉट एट ऑल कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो अगर कोई न्यू चीज है तो यू बोथ विल बी इक्वली अट्रैक्टिंग और दैट थिंग विल बी इक्वली अट्रैक्ट बोथ ऑफ यू ना. They understand the same. Ma'am, bonds are free. लेट मी कंप्लीट वन पॉइंट ना. फिर बीच में फिर बोलेंगे कि मैंने बोला था उसका भी पहले क्लियर होने दे. ही इज कमिंग ऑन द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो मुझे वो पूछना इसका मतलब क्या होता है. लेट मी कंप्लीट दैट. आई विल कम टू योर पॉइंट आल्सो. Same होगा. Electronegativity, it is an affinity towards electron. Electron will get attracted. We have carbon atom here. Both are having same electronegativity. Okay, तो फिर reactivity किसका ज्यादा हो गया? We are comparing this three. We are not comparing this two. Understood ना? In this three, which will be more reactive? Justify करो why? Bonds ज़्यादा है. तो bond ज्यादा रहने से क्या होने वाला As है? in availability of electrons. कहाँ है electrons? Like Where are electrons? मुझे तो कोई खाली electron नहीं दिख रहा है. Carbon does not contain any lone pair of electron, like oxygen and nitrogen. Where are free electrons? आपका आंसर? Same answer? No answer because I don't have any reason. Same answer. अभी भी आप ऐसा compare कर रहे हो या ऐसा compare कर रहे हो? The reasons are seeming sense. Reasons are not given, my dear. Reasons are not given. Okay, चलो जाते. Reason देखते हैं. अभी इसका क्या है? Then we will come to the answer.
Finally, I have asked you question which bond is there between carbon atom. बाकी का तुम्हारा सारा activity discussion बंद करो. Just focus here. You can have duration type of question. Huh? Now, in case of aromatic compound, we have covalent bond. Right? Covalent bond. Again, it is of two types: sigma bond and pi bond. ये type आपका हो गया है. सिलेबस में नहीं है। ओके चलिए सिलेबस में ये तो हम ज्यादा नहीं कर सकते उसको बट रिमेंबर दिस सिग्मा बॉन्ड दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स which cannot be broken easily whereas pi bond it is a weak bond now if you compare these three this contain carbon कितना चार होना चाहिए ना हो गया चार कार्बन there is only one sigma bond. Okay, one sigma bond, two carbons are there. So with proper energy, they are hold very tightly. If you go for this one, ये जो complete यहाँ पे था, it is divided into two bonds now. Out of these two, one is sigma, another is pi. Pi bond is एक चीज हो गई. Second, third one, here one sigma and two pi. Okay, now breaking of sigma bond it is not easy, but you can break pi bond easily. This is the reason why this is more reactive. In this three, which one is more reactive? Alkynes. If you compare these two, alkynes. Because in alkynes there are two pi bonds. Understood? One sigma, two pi, and this is between the bonded carbon atom जो हम लोग consider कर रहे हैं bonded carbon atom. तो आपके ये वाला पेज नंबर 60 this point is given. See, comparison दिया है. They are less reactive. कौन? Saturated organic compound. Under saturated we have alkanes. Okay. अंडरलाइन करो अगर वॉल्यूम है अगर नहीं है वॉल्यूम देन राइट इट डाउन इन योर बुक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव आप लिख लो ना नोटबुक में सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू non-availability of electrons in single covalent bond and they undergo substitution reaction. Substitution मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वहां पे करके दिखाया हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl, हाइड्रोजन इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH. We can replace it right now. So what you can write on that side for unsaturated compounds? Contrast point क्या आएगा? Single. It's a single bond. Double or triple bond. Completed. And which reaction it will undergo? Addition reaction. Or one more thing, remember when you are doing addition reaction for alkene and alkyne, you are converting it into saturated compound. Huh? So if you have alkyne C triple bond C, so it will be converted into C double bond C, and further it will be converted into saturated. ऐसे चेन बना के रखो. समझ में आया? Addition reaction, addition take place in this unsaturated part. Carbon carbon triple bond, double bond में addition होने वाला है. Your double bond, triple bond get reduced to double bond. Double bond get reduced to single bond. Okay, so your unsaturated compound finally it will be saturated. अभी अल्केन बनता है या डेरिवेटिव बनता है वो तो हमको पता नहीं. It depends what we are using. We are using hydrogen, we are using halogen. Depends.
हो गया? फॉर अनसैचुरेटेड यू हैव रिटन, लिखने के लिए बोला था, बैठने नहीं बोला था मैंने। हाँ बुक में देखो, दिस बुक is for our reference. If you are writing now, so it is going by this as well as this. ये क्या देखा ऐसे जाके बन किया, नेक्स्ट क्लास में you will open it or during exam. चलो लिखो, आपका पेपर लिखने पे बुक में तो सब कुछ दिया है. Then why boards are asking to write paper? Next time if you are going for exam ना, ये आपके लोकल वाले एग्जाम में, स्कूल वाले, वहाँ पे लिख देना टेक्स्ट बुक पेज नंबर दिस एंड दिस. चेक whether your teacher is giving you marks or not. पूरा मिलता है कि कितना मिलता है, बराबर है ना? लिखने का प्रैक्टिस रखो, जितना लिखोगे आपके लिए अच्छा, समझ के लिखो. कुछ भी लिख के डाला हो गया वैसे नहीं होना चाहिए. सो इवन इफ यू ओपन योर बुक आफ्टर 2 days ना, यू विल रिमेम्बर द थिंग्स. अगर कुछ नहीं लिख रहे हो ना तो भूल ही जाना अच्छे मार्क्स. देखो अभी पीछे ना चार्ट में क्लासिफिकेशन नहीं दिया है. It is only given in your book also, it is only given aromatic, but in volume on page number 60, cyclic or closed chain hydrocarbon, look the last sentence, this cyclic compounds are further divided into alicyclic and aromatic hydrocarbon. देखो जिनके पास में वॉल्यूम है चेक. हमारे इसमें डायरेक्ट एरोमेटिक दिया है, एलिफेटिक और एरोमेटिक. It is given मींस हमारे इसमें क्लोज रेट को डिफरेंशिएट नहीं किया, हमारे इसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक डायरेक्टली दिए. maybe it is given down somewhere in the explanation because same thing is given here in chart. Okay. ना एरोमेटिक का ऐसा दिया नहीं है कि क्लोज रेट है, डेफिनेशन में है बट ऐसा नहीं कि जैसे तो मैंने इसलिए बोला ना, this is there but it is not mentioned in our book. so we are not mentioned in an example. और अभी वॉल्यूम में दिया है, maybe in another publication it is given. बराबर है ना? आपके पब्लिकेशन में नहीं है, कोई दूसरे पब्लिकेशन में रहेगा. देखो अभी कहीं पे है इसलिए तो दिया, अदरवाइज क्यों देते थे. चलो नेक्स्ट करते हैं. कहाँ तक हो गया हमारा? नेक्स्ट कितना टाइम? ना सॉल्व करना है. टुडे वी हैव टू आस्क. 5 मिनट का ब्रेक. मैम देखो मैम. अरे यार क्या बोल रहे हैं? 6 7 हो गया. हाँ 20. चलो नेक्स्ट ले लो. अल्कील ग्रुप. This is very simple. This you can do. हाँ तो करो. Alkyl group means what and how they are obtained? Alkyl one atom of hydrogen. alkene to alkyne नहीं वो ना सब स्कूल वाइज, स्टूडेंट वाइज, स्कूल नेम वाइज हर एक का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा. तो वहाँ पे मैं तो काम नहीं कर सकती. बेटर आई कैन वर्क विद दिस स्पेलिंग ओनली. तो आपको जो बोलना है उसको बोलो. फॉर मी इट इज अल्किल. ओके. हाँ तो हाउ दिस अल्किल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड? Removing one hydrogen atom From alkene. alkyl. Write it down and give one example of that type. CH3. पूरा करो, पूरा करो. जो बोला है डेफिनेशन, राइट डाउन दैट डेफिनेशन, गिव वन एग्जांपल. हाँ उधर है वो मुझे मत बता. यू राइट इन योर नोटबुक एंड शो इट टू मी. स्पेलिंग मैंने वहाँ पे लिखा है. लास्ट बेंचर्स स्पेलिंग लिखा है, बुक देखने की जरूरत नहीं. राइट बाय योर ओन. क्या Anyways, don't refer book now.
मैं लिख रहा हूँ तुम वॉल्यूम ना लो। ले लो वॉल्यूम नहीं एंड रिटर्न इट बैक। ये सिर्फ हेडिंग करके दो कौन सी है। ले मैंने खुद से लिखने बोला है, आपका बुक इधर से उधर। हम लेते हैं। आपने बोला ना ले लो। मैंने बोला मेरा देख। और बाय द वे बुक से कॉपी करके मत लिखो। So alkanes on removal or loss of one hydrogen atom, it forms corresponding alkyl group, right? This you have to write in words. Example, CH4, loss of one hydrogen, it forms CH3. This is methyl group, methyl, and this is methyl. Similarly, you can write down for ethane. What is formula? C2 ethane, C2H6, removal of one hydrogen, C2H5 ethane. Spelling बराबर से लिखो, the confused मत हो. Now next one. Structure and isomers. ये बड़ा isomers. Structures and isomers. Structures and isomers. Okay. अभी ये हमने टॉपिक जब से स्टार्ट किया है, we are continuously talking about molecular formula, structural formula, right ना? तो molecular formula, what does it represent? The Actual number of atoms of different elements, right? Structural formula, structure. It is a structure of the molecule, and when we are saying structure, we are making that structure, we are showing arrangement. Am I right? We are showing arrangement of different atoms present in that compound. ऐसे कुछ भी बना के हम लोग नहीं छोड़ रहे. We are showing that for methane, carbon is present in the center and 4 hydrogen atom are tetravalently present. So molecular formula, it is the actual number of the atoms of different element present in the compound, whereas structural formula, it is a structural representation of the atoms of different element present in that molecule. Understood? Write down definition for both one. दोनों का भी लिखो. For molecular formula, definition लिखना है, हाँ? हाँ, molecular formula and structural formula. हाँ, अभी लिखना है. नहीं, तुम लोग का ऐसा लगता नहीं कि तुम लोग बहुत ज्यादा बात करते हो. और ये नहीं, मेरी बात सुन लो, क्योंकि मेरे पास में ये एक ही वाला सेंटर नहीं है. जो दूसरा सेंटर है ना, वो लोग नहीं, they are not at all wasting time. So if you go by this method ना, organic chemistry के लिए मेरे ख्याल से after Diwali also we will not able to come. Utilize your time in positive things. हो गया? Molecular formula, it is a formula which represent actual number of atoms of different element, whereas structural formula represent structural arrangement. Now do one thing. Take any example of your choice from alkane family. Okay? Write down molecular formula as well as structural formula. हाँ, उसके नीचे लिखो आपकी मर्जी. दो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला alkane हाँ, alkane. Take any member from alkane family. Write down its molecular formula and structural formula. Okay, आप structure में क्या करने वाले? You will only make the structure ना. How carbon and hydrogen atoms are present. अब मैंने आपको simple वाला alkane ही दिया है.
अल्कीन अल्काइन नहीं बोला है. You go with this. जब आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे, then you can go finally with this example. मुझे लगता है इसमें आप सिंपल वाले ही दोगे, then you finally go for this. क्योंकि ये आपके बुक में दिया. Copy, please don't copy ना. If you understood the concept is clear, please don't copy from your book. दो तो बना है सही है अच्छा, वो मैं डिजाइन करूँगी. ये कैसे ये अलग है compound is one. What is molecular formula? So you say we go and that is it. इसमें तो डिफरेंस दिखता है, but at present we are not dealing with this thing. इसके बाद वाला पार्ट हमको वो ऐसे स्प्रेड वाला फॉर्मूला चाहिए, जैसे मैंने मीटिंग में स्टार्टिंग में बनाया था ना, वैसे सारे ये हाइड्रोजन को स्प्रेड. Okay, see here, arrangement you are giving in this particular format. You are splitting all hydrogen atoms properly. मीथेन का तो करेक्ट है वहां पे. अब वो आगे क्या बनाया उसके? ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एंड वन मोर थिंग, दिस इज व्हाट, ओके, ये C2H6 इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन. तो यहाँ पे लिखो ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज, क्योंकि तुमको पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. समझ में आया ना? तो अभी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच इज मॉलिक्यूलर विच इज स्ट्रक्चरल. तेरा मार्क्स मुझे कट करने का, मुझे नहीं पता कौन सा मार्क्स. समझ में आया मेरा पॉइंट? सो राइट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. नाउ वन मोर थिंग, ये वाला, दिस वन आल्सो कंप्लीट दिस वन. हाँ ब्यूटेन का yes done ना. डन. एक मिनट राइट स्ट्रक्चर yes done. Just check. CH3, CH2, CH2, CH3. ये सब हमने we have splitted all hydrogen atoms, right now around 4 carbon atoms. So our structural formula it is in this way: CH3 ऐसा वाला जिसने किया है ना उनका सबका करेक्ट है. दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला. Okay, now one more thing. In order to make this splitting arrangement, it is taking more time. If you are showing only structure formula, okay, चल जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा. But when it's come to the reaction part, तो ऐसा बड़ा splitted form we will not go. In that we will go with the condensed form. वहाँ पर ऐसे करे तो मार्क्स नहीं, मार्क्स नहीं काटने वाले. हमारा टाइम बचे. नहीं, आपका टाइम बचा. हम टाइम नहीं बचा रहे. जैसे मैंने उनको बोला आप रिंग बना रहे हो तो CH2 नहीं लिखना, हम हमारा टाइम बचा रहे. वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दिस स्प्लिटेड फॉर्म in smaller groups. So this particular part it will become CH3, this two will become CH2, and at the end again CH3. Or still condensation you can do if you want, otherwise not required. CH3, CH2 2 times and CH3. अभी तुमको और एक चीज मैं बता दूं, एक मिनट, और एक चीज बता दूं. जैसे इन्होंने पूछा अगर ऐसे करेंगे तो क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मार्क्स कटेंगे क्या? In this you can find 2 different types of carbon atoms. This structure is symmetrical. Yes. Okay, terminal carbon atoms are CH3, these carbon atoms are CH2. So there are chances of having different portions. कौन सा हाइड्रोजन निकाल रहे हो, whether you are removing this hydrogen, terminal hydrogen or the middle hydrogen. समझ में? Different products are possible. जैसे आप IUPAC करोगे you will come to know it can be numbered also. तो प्रोडक्ट अगर 1 पर आया है 2 पर आया मतलब हमने कौन सा हाइड्रोजन निकाला है. समझ में आया? तो इसको हम इस तरीके से शॉर्टकट करके लिख सकते हैं. बट अगेन
क्वेश्चन विल बी इन दैट फॉर्मेट, हाँ, जैसे मैंने बोला है, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला, गिव इट्स कंडेंस्ड, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, बराबर से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। एंड फॉर रिएक्शन ना फर्स्ट थिंग इतना बड़ा वाला नहीं आता, नॉर्मली इट इज स्टिल प्रोपेन, प्रोपेन के भी अलग अलग आइसोमर्स है, इसमें भी आपको आइसोमरिक फॉर्म मिल जाएगा, तो कंडेंस करके ही हम लोग उसको यूज करते हैं। ओके, दिस थिंग यू अंडरस्टूड, दिस इज कंडेंस फॉर्मूला, सो राइट डाउन कंडेंस फॉर्मूला। CH3 ट्वाइस लिख सकते हैं और हाँ लिख सकते हैं, CH2 बट बेटर यू गो विद दिस, वो तुझे बुक में कहीं और मिलेगा तो इसके साथ नहीं, कंडेंस फॉर्मूला फॉर ड्यूटी। ये वाला कौन सा वाला? नहीं नहीं ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ये ऐसे नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसे किया है, ये मैंने आपको मिडल पार्ट कंडेंस करके दिया है, राइट। इफ इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू आर डूइंग लाइक दिस CH3 2 times, CH2 2 times, this is wrong, हाँ। अब ये रॉन्ग कैसे है? दिस इज योर फर्स्ट CH3, हाँ, देन सेकंड CH3 कहाँ लगाना है? वो कहाँ लिखा है यहाँ पे? तो फिर इसका मतलब क्या होता है? ये मैंने साथ में लगाया, इसका मतलब क्या है? बोथ आर वन आफ्टर अनदर। इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, दिस मींस व्हाट? Second methyl group CH3, it is next to this one. Is it correct? So you will make like this. Like this. No, no. This The is wrong. the one ये before वाला करो या ये वाला करो। चलो ब्रेक लेते मैं हैं। बात कर हाँ बात करना, ब्रेक है बेटा। बात करे बातें करे, मैम आपने हमारे 2 मिनट खा लिए। 2 मिनट का नहीं खाया। हम 2 मिनट का ये अभी बताएंगे। इस गणवी को एंकर इशू देखना फालतू में आउटपुट से हमें चिट रेस करते हैं इसके ऊपर है लेबर फालतू में चिट उसे दे वैसे हाँ उसने जो समझाया ना फिर डाउट आया ना फिर उसको गुस्सा आता है कैसे लगता है? जब मैंने पूछा था ना मेरे को नहीं समझा था तो तभी भी चिट हाँ वैसे है। अब मैं सेकंड लेक्चर में नहीं पूछ रहा हूँ। चलो बंदा एक पेंसिल है इसकी टीचिंग ने मेरे को सर किया था हमारा पेंसिल है इनकी अभी टीचर क्या भी मैंने सुनी जान को बोल दूंगा सर पहले लिखते थे देना तो समझा दे रहे स्कूल में क्या लड़के बोल रहा था क्या बोला बीजू सर आगे अरे खाली अक्षर अक्षर को ये कुछ भी बोल देना ना ये जो बोल रहे क्या बोल ये वैसे तो बीजू सर उनको ये सब चल रहा है क्या वैसे बोलते हैं बीजू सर मेरे बारे में क्या बोलते हैं मतलब मेरे बारे में हाँ तेरे बारे में ठीक है बोल ना बोलते हैं जो इसमें नहीं पहले बीजू सर बोलते थे इसमें पता है कौन है अक्षरा को अक्षरा को भी वो इसमें बोलते हैं ही वेरी गुड पॉइंट्स वेरी गुड बिहेवियर मैं भी साथ तेरा हाथ रहा हूं देखो कैसे पता अक्षरा की क्लास में हमेशा बात करती है इसकी वजह से इसके साथ अपने स्कूल में हाँ? अपने स्कूल में वो काली आई थी ना तेरे को देखने हाँ वो काली और एक मोटी सी वो शिट भाई अरे ये क्या हो रहा है मैं गया तो शुभम से बोल रहा हूँ साले छोड़ना उन लोग ऐसे ना क्या हैंडबॉल खेल रहे थे ना पेपर बॉल से ऐसे 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 नहीं रे सर्कल ये जल्दी पेपर बॉल रे हां घुमा सुन ना हाँ सब लोग उसको अपने आर्म से उड़ाएंगे सर्कल में और जो हमारा साइड ओनली शुगर एंड बेस या ये एक्सक्यूज पूछेगा अरे मेरे को जाना है चार ये ओए ये ड्राइंग है यस दो फाइल खिला पहले लगाई नहीं होता
मैं किसी के तो नहीं एक वो इधर